Hello everyone, good evening and welcome back to the session. So I hope that everybody is fine and in good health. So from today we'll be starting this new series of paper 2, that is 5000 question series, and we will try to have the questions of each and every paper. Matlab, we'll try to cover the concepts from each and every paper of computer science exam, right? Be it your gate exam, be it your net exam, be it your PGT or KVS or any other exam that you have, bar, ISRO, any exam, even state entrance exam जो होते हैं उसके भी questions we'll try to have it over here. Okay. So quickly everybody please join and then we'll start with the session. Good evening Anukul. So all those who are new or who will be watching the video later, please join this telegram group, that is t.me/netreadigimento, so that you can be updated about the classes and you can be provided the PDFs. I have already told you that PDF for this session, that is the 5000 question series, you will get the PDF after we'll be completing questions, around 50 questions around we'll be completing, then I'll be sharing the PDF. Okay. अभी starting में we'll be doing few questions, not many questions, but later as we'll be processing in this series we'll add more and more questions. Okay, that per day questions जो हैं अभी we'll be doing less, few questions only, but जैसे जैसे we'll be going ahead in this we'll be covering more and more questions on a daily basis. Okay, so everybody please give a confirmation कि audio video clear आ रहा है, then we'll start with the class. Good evening Mahesh. Regarding courses, if you want to join, if you want to enroll into any course, please just call on this number which is mentioned over here. Feel free to call and your doubts will be sorted over here. Okay, call on this number 98218 Okay, thank you Mahesh. Okay, so let's start with the class. First question is, what is the value of 3564 base 8 plus 323232 base 4? Yes Nitish, just now we have started with the class. This is the first question. Hello Jaspreet. No Nitish, time was 4:30. मैंने बोला है कि प्लीज टाइम के लिए ग्रुप एक बार टेलीग्राम ग्रुप चेक कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि डेली टाइम जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है, either 4 or 4:30. So please उसके लिए I have just, that's why I've requested everyone to please join the telegram group so that you can be updated about the time. Yeah, so what is the answer to this question? Good evening Archana. मॉर्निंग सेशन की जो क्लास है उसकी पीडीएफ भी आपको आफ्टर कवरिंग 50 क्वेश्चंस आई विल गिव. ओके, yes Nitish, 2 classes are going on. First class is in the morning, right? Morning में we are discussing questions on paper 1, ठीक है, and in class, evening class
अर्चना प्लीज अपने वीडियो का रेजोल्यूशन क्वालिटी जो है उसको चेंज करो। एंड ये आपकी मॉर्निंग में चल रही है, ठीक है। मॉर्निंग में वी आर डूइंग डेली, आज ही से स्टार्ट किया है हमने नितिश, ठीक है। पेपर 1 की क्लासेस भी आज से स्टार्ट हुई हैं एंड पेपर 2 की सीरीज भी आज से ही स्टार्ट हुई है। सो ये आपकी इवनिंग में है, ओके। सो 2 classes are going on, paper 1 and paper 2, both for both we are practicing the questions, okay. Good evening Shakti, good evening. Yes, what is the answer to this question everyone? So you can see that base, जो आंसर का बेस है वो हेक्साडेसिमल बेस है. This means that you have to first convert your bases into equal, same बेस में दोनों वैल्यूज को कन्वर्ट करना है और फिर अपने आंसर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट? So what we can do is we can convert both the numbers in decimal and then we can convert it into hexadecimal. That will be quite easy for us. Yes, convert both into decimal and then from decimal convert it into hexadecimal. Okay. So what is 35648 in decimal? किसी ने किया इसको? So what we are doing is we are converting these bases into decimal first. So what will be the value of 3564 in decimal? Anyone? So I hope you all know how to convert from base 8 to base 10, right? What we do, we just write it 0, 1, 2, 3, and then what we will do, good evening Priyadarshini, we'll simply multiply it. So it will be 3 into 8 raised to power 3 plus 5 into 8 raised to power 2 plus 1 into 6 into 8 raised to power 1 plus 4. So this number will come out in decimal. Plus similarly for this number as well you have to do the same thing. So it is 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So this will be 3 into 4 raised to power 5 plus 2 into 4 raised to power 4 plus 3 into 4 raised to power 3 plus 2 into 4 raised to power 2 plus 3 into 4 raised to power 1 plus 2 into 4 raised to power 0. Right? Then no, A is not the right answer. A is not the right answer. Okay, so when you will solve this, what you will get? What you will get when you will convert 3564 base 8 to decimal, you will get 1908 in decimal. And when you will convert this entire thing into decimal, what you will get? You will get 3822 in decimal. Right? Now my base is same. Now I can add them easily. So what it will be? It will be 5730 again in decimal. Good evening Birpal. Okay. Now I have to convert this decimal into hexadecimal because the answers are given in hexadecimal. So what we will do, 5730 ko you have to convert into hexadecimal. So I hope you all know how do we convert. So this will be 358 and remainder will be 2. Then again you will solve by 16. You will get 22 over here and remainder will be 6. Then again you will be solving over here. You will be getting 1 and remainder as 6. So the answer will be 1662 base 16. Yes or no? Anybody got this as answer or not? किसी का आया ये आंसर?
Did anybody get 1662 base 16 as the answer? That is option number C. आ गया? Good. Okay, everyone. All those. I hope this is clear to everyone that how we will solve, how we will be solving these type of questions. You should know that how we will convert base, how we will convert from other base to decimal and from decimal to other base. This you should know, okay? Next question करें. Shall we move to next question? Okay. Any doubt? Anyone? Any doubt? Okay. Next question is very easy. If n of A is equal to 20 and n of B equal to 30 and n of A union B is 40, then A intersection B is. Very, very easy question. Right? The correct answer is 10. So this is very easy. Everybody knows that how to solve this one. We have this formula: n A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. So simple substitute the values and you will get your answer. Okay. Moving on with the next question. Okay, this one is question number 3. So it says, if one wants to remove a relation from an SQL database, then which command should be used? So you want to remove a relation from an SQL database, so which command you will use? Purge, drop table, delete or remove? Right? Very easy. So drop table जो है, drop table will remove the entire relation. Okay, good evening Bana. जो आपकी पूरा relation बना है, suppose relation student is there, so with the help of drop you will be able to remove the entire relation, and they have clearly writing that one wants to remove a relation, so for that we will have drop table. Can anyone tell me what is purge? Can anyone tell me what is purge? This option number A कभी सुना है anyone? Purge. Delete पूरे relation को remove नहीं करेगा. Everyone who is saying delete as the answer, delete will not remove the entire relation. Delete will remove the tuples or delete can remove particular tuple. But entire relation को अगर remove करना है, so for that we have drop table. Now you have to tell me what is purge. Anybody? Purge? Anyone? सुना है कभी purge? PURGE. पर्ज रिलेशन कभी सुना है? पर्ज इज नॉट रिकवरेबल. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अनुकूल, थोड़ा इलेबोरेट करोगे? सी पर्ज बेसिकली क्या करता है? सी व्हेन वी आर इशूइंग अ ड्रॉप टेबल, one can specify the purge option. ठीक है, whenever you are using drop table, with drop table you can use purge. ठीक है, now what is it? The purge option will purge the table. Purge the table मतलब कि it will completely remove the table and it will remove the table from recycle bin also. ड्रॉप के बाद आपकी जो टेबल है, आफ्टर यूजिंग ओनली ड्रॉप कमांड, द टेबल विल गो टू द रिसाइकिल बिन. ओके, बट व्हेन आई एम यूजिंग पर्ज ऑप्शन, विथ पर्ज ऑप्शन द टेबल एंड इट्स डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स
everything will never appear in recycle bin also. So the risk of specifying the purge option is that you will not be able to recover the table. The benefit of using purge is that you can ensure that sensitive data will not be left sitting in the recycle bin. So this mean मीशू प्लीज एक बार अपना रिफ्रेश करके चेंज कर लो वीडियो की क्वालिटी, ठीक है? So then your screen will be visible to you. Change the quality, change the resolution of video. Okay. So there is one question. Priyadarshini is saying difference between purge and truncate. So who will tell what is truncate? What does truncate means? So truncate, okay, so let's see one by one what is it. First बहुत डाउट अगर आ रहा है, so what is delete? ठीक है, so I'll tell you over here very quickly. delete जो कमांड है आपका, ठीक है, delete will be used for deleting a particular record. Okay, so when I have to delete a particular record, for that I'll be using SQL delete. Particular record से मतलब particular tuple, मतलब if this is my table, if this is my relation, so in that a particular record, if I have to delete this record, for that I'll be using delete. ठीक है, drop table, what it will do, drop table will delete the entire table, delete entire table or delete entire relation will be deleted. Now what about truncate? So what will truncate do? Truncate will delete the entire data. Okay, truncate will delete the whole data but not the table. Okay, so this is what is this, ठीक है, right? Truncate removes the entries of the relation but the structure of relation remain unaffected, correct? Okay, and purge what will do? Purge you will use with drop table. Okay, drop table के साथ आप purge का use करोगे and then your data will be deleted from recycle bin also. ड्रॉप टेबल का एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो कि सपोज एक टेबल मेरे पास एक रिलेशन है, सपोज दिस इज वन रिलेशन विद मी, ठीक है, एंड द रिलेशन इज स्टूडेंट एंड आई हैव नेम, रोल नंबर, एड्रेस लाइक दिस, ठीक है, एंड आई एम सेइंग ड्रॉप टेबल student. So when I'm saying this means that I want to delete this entire table. जो ये पूरी table है student की, this entire table will be deleted from the database. And where it will go? It will go to recycle bin. But if I use drop table student purge, this means that I do not want this table to be in recycle bin as well. So then it will be deleted from recycle bin also. Got this point everyone? डिफरेंस समझ में आ गया तीनों का, ट्रंकेट, डिलीट एंड ड्रॉप टेबल? ओके ओके, सो दिस इज आई हैव रिटन ऑल्सो कि यहाँ पे पर्ज का मतलब व्हाट पर्ज विल डू एंड हाउ पर्ज विल रिएक्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. If set C is 1, 2, 3, 4, so they have given us two set, one is C 1, 2, 3, 4 and they are saying C minus D is 5, then you have to tell that what the value of set D can be from the given options. So what they're saying, set C has values 1, 2, 3, 4 and C minus D is equal to 5, then what will be the value of set D?
So if I am having this Venn diagram type of thing, okay, so this is set C and this is set D. So they are saying that C minus D, matlab you all know that what will be C minus D? C minus D क्या हो जाएगा आपका? C minus D will be this value, this entire thing, इतना, not this much will be C minus D, right? This is C minus D, and they are saying that this value C minus D is equal to 5. So if C is 1, 2, 3, 4, this means that what is present in D? Means C minus D, intersection D में we are having few elements. 5 में कुछ नहीं आ रहा, मतलब this has nothing over here. So the correct answer is option number C. That is 1, 2, 3, 4 and 5. Correct. Next question. Now this question is from mobile computing, and this is a good question. They are saying in a typical mobile phone system with hexagonal cells, okay, what cells? With hexagonal cells, it is forbidden to reuse a frequency band in adjacent cells. If 840 frequencies are available, how many can be used in a given cell? What they are saying that you have a mobile phone system, and that system has hexagonal cells, and the condition is that no two adjacent cells can use the same frequency band. Okay, so you have to tell that if total there are 840 frequencies, then how many frequencies can be used by one cell? एक cell में how many frequencies you can use? Okay. So this question has nothing to do with mobile computing though. You can solve it अगर आपको knowledge नहीं भी है तब भी. Okay. Okay, so we know what is hexagonal cell. Hexagonal means a cell which has 6. ठीक है. Now hexagonal cells basically क्या हुए? Hexagonal cells हुए आपके first I'll give the answer. The answer is D, that is 280. Okay, the correct answer is option number D. Now these are your hexagonal cells. Hexagonal cells मतलब कि every cell will be connected to 6 different cells. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is what is a hexagonal cell structure. ठीक है, this structure is known as hexagonal cell structure, that every cell is connected to 6 cells. Okay, now they are saying it is forbidden to reuse a frequency band in adjacent cell. मतलब कि if I am giving this cell, if I have given this cell frequency band 1, okay, so to the adjacent cells I cannot give frequency band 1, right? So I can give this 2, frequency band 2. Now this cell cannot have either 1 or 2, so it will have what? It will have frequency band 3. Yes. Now this cell will have what? Now it is connected to this and this. Okay, so it cannot have 1 or 3, but it can have 2. Then 1 and 2, it can have 3. Then 1 and 3, it can have 2. Then 1 and 2 and 2, it can have 3. So basically for one cell I can arrange in 3 frequency bands, right? For one cell I can arrange 3 frequency bands. मतलब 3 different frequencies अगर होंगी, so I can arrange it. Total frequencies कितनी दी हुई है? Total हमें 840 frequencies are given to us. So how many frequencies you can use in a given cell? 840 divided by 3, that is 280. So this means that in a given cell with 840 frequencies available to us, and with the condition that frequency band cannot be used in adjacent cells, so I'll be using how many frequencies? 280 frequencies. So the correct answer is option number D, that is
280. करेक्ट? गॉट एवरीवन? क्लियर है? Yeah, 840 divided by 3. So you will get, this is how you will get your frequencies. Okay. Next question. So a bridge has access to dash address in the same network. A bridge has access to dash address in the same network. So the correct answer is a bridge has access to physical address in the same network. Okay. डेटा लिंक एंड एप्लीकेशन कोई एड्रेस नहीं होता पहली बात, ठीक है. सो द आंसर हैज टू बी ए फिजिकल नेटवर्क और नेटवर्क आईडी, नेटवर्क एड्रेस आप बोल सकते हो, ठीक है. बट डेटा लिंक एड्रेस, एप्लीकेशन एड्रेस तो कोई एड्रेस है नहीं, राइट. नाउ इफ यू सी अ ब्रिज ऑपरेट्स एट डेटा लिंक लेयर, ठीक है. डेटा लिंक लेयर पर ब्रिज वर्क करता है, गिविंग इट एक्सेस टू द फिजिकल एड्रेस ऑफ ऑल स्टेशंस कनेक्टेड टू इट, ठीक है. ब्रिज आपका वर्क करता है डेटा लिंक लेयर पे, बट एड्रेस जो वो यूज करता है, इट हैज एक्सेस टू फिजिकल एड्रेस, नॉट डेटा लिंक एड्रेस. डेटा लिंक एड्रेस तो कुछ एड्रेस होता नहीं है, right? So a bridge operates at data link layer, giving it access to the physical address of all the stations connected to it. तो correct answer is A. यहाँ पे वो ये नहीं पूछ रहे कि कौन सी लेयर पे वर्क कर रहा है वो. They are asking that bridge has access to which address in when it is connected to same network. So bridge works at data link layer, but it gives access to physical address. Okay. Okay. Clear everyone? Okay. Next question. Very easy. The period of a signal is 10 milliseconds. What is the frequency in hertz? So this is very easy. The period of a signal is 10 milliseconds. What is the frequency in hertz? So for this question, you should always remember this, that is time or time period is equal to 1 upon f, where f is your frequency. Okay, so this is the formula that you all have to remember. Okay, so what they're saying is the period of signal is 10 milliseconds. That is, time given to us is 10 milliseconds. So 10 milliseconds is equal to 1 upon f. F is what is the frequency, right? So what it will be, f will be equal to 1 upon 10 milliseconds. Now what is milliseconds? Milliseconds is 10 into 10 raised to power minus 3 seconds, right? So this will go up, so it will become 10 in 10 raised to power 3 upon 10. So this will be 100. So the frequency will turn out to be 100 hertz. Okay, so this formula is what you all have to remember. Okay, next question. Okay, consider a hash table of size 7 with starting index 0 and hash function 3x plus 4 mod 7. Assuming that hash table is initially empty, which of the following contents of the table when sequence 1, 3, 8, 10 is inserted into a table using closed hashing? Note that blank denotes an empty location in the table. So this is basically hashing. ये आपका गेट का क्वेश्चन है and this is very easy.
ट्राई करो. ओके. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. So what they are saying that you have to consider a hash table of size 7 with starting index 0. So what you will do, you will make one table, right, and the indexes will be 0 starting from 0. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this one is 7. Okay, so 0, 1. Okay, so only these will be needed. 7 blocks ho gaye hamare, right? Then they have given you a mod function. What is it? They are saying that function is 3x plus 4 mod 7, right? And then you have to insert values. What values you have to insert? You have to insert 1, you have to insert then 3, then 8, and then 10, right? So these are your values of x. So what, how you will do? Very easy, nothing you have to do. I'll just explain. I'll not go in very much detail. So 3 multiplied by 1 plus 4 mod 7, this is how you will solve. So this will be 7 mod 7, and 7 mod 7 will be what? 0. So 1 will come over here. Okay, 1 will come. Then we have 3. So 3 times 3, that is 4, that is 13 mod 7. So where this will come? 6. So 3 will come over here. Then we have 8. So 8 times 3 is 24. 24 plus 4 is 28. 28 mod 7. So where it should come at 0, right? But 0 is already occupied. So it will go over where? It will go to place. 0 will come, but it is already occupied. So it will go to place 1. And then we have 10. So 34 mod 10. So where it will go? 7. So where it will go? So 34 mod 7 will give you what? 34 mod 7 will give you 6 as a remainder. But 6 is already occupied. So you will go to 1 is already occupied. 0 is already occupied. 1, 2. The space that is left is 10. So this will is blank. So 1, 8, 10, and 3. So the correct answer will be option number B. Okay. So almost everybody gave the correct answer. So, okay. Next question. Okay, we are given following set of information: process ID, register values, last processor burst time, result of previous process executed. So from the above PCB contains, so from the above information, PCB contains which of the following set of information? So you have to tell PCB में क्या क्या आता है.
right? So correct answer is option number C, that is 1, 2 and 3. So if you see, this is your PCB block, ठीक है, ये आपका process control block है. So it has pointer, it has process state, ठीक है, it has pointer, basically it's process number, process program counter. So आपकी process ID यहाँ पे होती है, ठीक है, process state pointer आपका process ID होता है. Then it has register values. So register की values, last processor burst time. Now this is not written over here, but ये जो आपका miscellaneous accounting and status data होता है, it basically contains what? It basically contains CPU burst time. ठीक है. सो जो आपका लास्ट प्रोसेसर बर्स्ट टाइम है, इट इज बेसिकली स्टोर्ड ओवर हियर, मिसकेलेनियस अकाउंटिंग एंड स्टेटस डेटा यहाँ पे. बट दिस रिजल्ट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस एग्जीक्यूटेड, ये पीसीबी में स्टोर नहीं होता. ठीक है. प्रोग्राम काउंटर मतलब एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भले स्टोर होता है प्रोग्राम काउंटर, बट रिजल्ट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस एग्जीक्यूटेड इज नॉट स्टोर्ड इन पीसीबी. क्लियर? ओके एवरीवन, एनी डाउट? उसके अलावा आपके पास मेमोरी लिमिट्स हैं, ओपन फाइल लिस्ट हैं, ये सब डिटेल बाद में देखेंगे. बट मेनली यू हैव टू नो इज दैट कि जो लास्ट प्रोसेसर बर्स्ट टाइम है, ये आपका यहाँ पे अकाउंटिंग एंड स्टेटस डेटा पे स्टोर होता है. वेरी इजी क्वेश्चन अगेन. सो इट सेज which of the following pairs have different expressive power? Which of the following pairs have different expressive power? See, generally when we study this, we all know that every machine is equivalent to the different machine related to the same language. Like अगर हम रेगुलर लैंग्वेज की बात करें, सो वी हैव टू मशीन्स रिलेटेड टू इट, वन इज NFA and one is DFA. So both are same in expressive power. But when we talk about push down automata, so in case of push down automata, deterministic push down automata and non-deterministic push down automata both have different expressive power. Rest everything, whether it is Turing machines, single tape, multi-tape, everything has same expressive power. Only push down automata have different expressive powers. Okay, so remember this point. Okay, the rule for implicit type conversion in C is, the rule for implicit type conversion in C. Implicit type conversion means the type conversion that is done automatically. So the rule for implicit type conversion in C is, so the correct answer is option number B. Int, then unsigned, then float, and then double. So this is what you all should know. This is how the type conversion goes. Okay, if you are able to see it, you can see that first we have integer, then we have unsigned int, then we have long, then we have unsigned long, then we have long long, then we have unsigned long long, then float, then double, and then long double. So this is very important. The correct answer is option number B. Integer, then unsigned integer, then float, and then double. Okay, so majority of you said A, but A is not the right answer. I hope it is clear to everyone. Implicit type conversion आपका कैसे होता है? It is integer, then unsigned integer, and then next. Okay.
Next question. Now, in the circuit shown, ठीक है, in this circuit given to you, AB equal to 0 0 and AB equal to 0 1. So with the values of AB as 00 and value of AB as 0 1, you have to find the values of C and S, where A and B are not bubbled. So basically they have shown this is bubbled, this is not a bubbled, okay, this is not bubbled input, it is simple this, like this. Okay, this is not bubbled, and this is your AND gate and this is your XOR. So what will be the value to this one? So first you have to take value of A and B as 0 0, and then you have to take value of A and B as 0 1. This is very easy, बहुत ही easy है. So first we have what? First we have A and B as 0 0. So when I am having 0 and 0 as both as inputs, so AND क्या हो जाएगा? AND will be 0. And what will be XOR? So we know that when both the inputs are same, the XOR is also what? XOR is 0. So पहला हो गया आपका 0 0. Now we have two options for 0 0. Let's see the next one. Again we have A as 0 and B as 1. So when I'm doing AND, again the result will be C will be 0 only and XOR हो जाएगा आपका 1. So once you will have 0 0 and again you will have 0 1. Okay, so this is easy. Next question. In a 2-pass assembler, the pseudocode EQU, ठीक है, this is a pseudocode. EQU is a pseudocode that can be evaluated during. So when you have a 2-pass assembler, so the pseudocode is evaluated during which phase? Pass 1, pass 2, or not evaluated by assembler, or none of the above? EQU के बारे में सुना है आप लोगों ने? स्यूडो कोड EQU सुना है कभी कहीं पे भी? Has anyone heard about EQU pseudocode? Okay. ओके, इसका आंसर पहले डिस्कस करते हैं, फिर मैं बताती हूँ EQU क्या होता है, ठीक है? सो आंसर क्या है इसका? एनीवन? सो समबडी सेइंग 2C. तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, पास 1. ठीक है, सो 2-पास असेंबलर में पास 1 में आपका स्यूडो कोड जनरेट होता है. नाउ फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज असेंबलर. ठीक है, टू फेज असेंबलर क्या होता है? सो असेंबलर जनरेट्स इंस्ट्रक्शंस बाय इवैल्यूएटिंग द निमोनिक्स in operation field and find the value of symbol and literals to produce machine code. If assembler do all this work in one scan, then it is called single pass assembler. Otherwise, if it does perform in multiple scans, it is called multiple pass assembler. Now in two pass assembler, the task is divided into two phases. पहला phase है pass 1 का. Define symbols and literals and remember them in symbol table and literal table respectively. Keep track of location counter. Process pseudo code operations. So यहाँ पे this is written process pseudo operations. ठीक है? Then pass 2 is generate object code by converting symbolic opcode into respective numeric opcode and then generate data for literals and look for values. So assembler basically क्या करता है? assembler जो है assembly language में आपका program है, okay? Your program is in assembly language, so assembler will convert your program, assembly language program to machine language. यही करता है assembler? Yes or no?
मैम यूजीसी रेड का सिलेबस अपडेटेड आया ना अभी? आई हैव नॉट सीन अभी, मैंने देखा नहीं है. इफ इट इज सो आई चेक एंड देन आई अपडेट यू ऑल. ठीक है. सो पास वन जो है आपका टू फेज असेंबलर में, पास वन में आपका स्यूडो ऑपरेशन जनरेट होता है. अब यहाँ पे इन क्वेश्चन दे हैव मेंशन्ड EQU. So this is a type of pseudocode that is EQU. So what is it? The EQU directive gives a symbolic name to numeric constant. Okay, so if you see over here, it is written EABC. I'll just zoom in so you can see it clearly. ABCEQU2. ठीक है. So what does it says is it means that it assigns the value 2 to symbol ABC. So मतलब if in your sentence anywhere you are using ABC, so your EQU will convert it into 2. Similarly, XYZ EQU label plus 8. So assigns the address label plus 8 to the symbol XYZ. ठीक है. So then fic EQU 0 मतलब ये आपका कोड है somewhat. So they are saying assigns the absolute address 01C to the symbol fic and marks it as code. So basically EQU में क्या हो रहा है आपका? EQU डायरेक्टिव जो है एक सिंबॉलिक नेम दे रहा है टू अ न्यूमेरिक कांस्टेंट. दैट्स इट. या न्यूमेरिक कांस्टेंट है, या रजिस्टर रिलेटिव वैल्यू है, या फिर कोई पीसी रिलेटिव वैल्यू है, इन सबको वो एक सिंबॉलिक नेम असाइन कर रहा है. दैट इज योर EQU. सो दैट इज योर pseudo operation. Okay, so the correct answer is in a two pass assembler the pseudo code EQU is to be evaluated during pass 1. Any doubt? So let me write one more question. Just give me a second. पास में बाना इट्स सिंपल कि आपके जो पास असेंबलर होते हैं, ठीक है, उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट पास होते हैं. ठीक है. सो हर पास का एक टास्क असाइन होता है. सो दिस इज व्हाट दे हैव रिटन ओवर देयर. आई विल एक्सप्लेन अगेन. ओके. This is the question, everyone. Please look over here. Consider two pipeline A and B. A having 8 stages with uniform delay of 2 nanoseconds and B having 5 stages with respective delays 2 nanosecond, 3 nanosecond, 1 nanosecond, 2 nanoseconds and 2 nanoseconds. So how much time is saved if 100 instructions are pipelined using A instead of B? So you have to tell that how much time you will save if you are using A instead of B.
So I'll give you options. मेघा आप कह रहे होगी सेम 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 से मतलब मेघा. So we all know this formula. What is the formula for pipeline? Calculating the time, execution time for pipeline. Right? This is the formula we have. Execution time is equal to k plus n minus 1 multiplied by 100, where k is the number of stages and n is your number of instructions. And this one is your clock cycle time for your pipeline stages, right? So we have to do what? We have to calculate this for A and for B, right? Anybody else? किसी ने और ने किया कि नहीं? So now we have execution time for A. So what is it? K. What is, how many stages do we have for A? A is having how many stages? 8 stages with uniform delay. So each delay is of 2 nanoseconds. So it will be what? It will be 8 plus 100 minus 1 multiplied by 2. So what this value will be? This value will be 214 nanosecond. Why 100? Because they're writing that how much time is saved if 100 instructions are pipelined using A instead of B. Right, this is for execution time of A. Then we have execution time of B. Again, same formula. How many stages do we have? 5 stages for B, right? And delays are different. 2, 3, 1, 2, 2. So I have told you that when we have different delays, okay, so what will be the value for delay for pipeline B? TP will be equal to maximum of all these delays. What? How many delays are there? 5 delays. 2 nanosecond, 3 nanosecond, 1 nanosecond, 2 nanosecond and 2 nanosecond. So maximum will be 3 nanosecond, right? Then what is it? Then what will be the execution time for B? 5 plus again 100 minus 1 multiply by 3. So when you will solve this, you will get what? You will get 312 nanoseconds. What they are saying, they are asking that how much time will be saved for using A instead of B. Okay, so time saved will be, so 312 minus 214. That is what? That will be equal to 98 nanoseconds. So the correct answer for this question is option number D, that is 98 nanoseconds. समझ में आया सबको everyone? किसी को doubt इसमें? Any doubt in this question, anyone? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. बी वाला रिपीट करना. ओके, सी दिस इज आई हैव टोल्ड सोनू पहले दैट इन वन ऑफ द क्लासेस, बट ऐसा होता है कि इफ वी हैव
if we are talking about pipeline, ठीक है, if we are talking in terms of pipeline only, just give me a second. Okay, if we are talking in terms of pipeline, so what happens is कि this is the case, like we have few stages and they are connected to each other in a pipeline manner, ठीक है. Each stage, this is your stage 1, okay, this is your stage 2 and so on. Now each stage has a certain amount of delay, ठीक है. So if it can be, there are two cases now. First case is that it is all stages have uniform delay. Now what does it means? It means that all the stages, that is I am having 1 2 3 4 5, all these 5 stages are having same delay. Same delay मतलब कि let's say 2 nanoseconds, मतलब कि every instruction at every stage is taking at least 2 nanoseconds to execute. This is the first case. So when uniform delay अगर है, if you have a uniform delay, so in that case हम overall pipeline का जो time है, एक जो time हम लेते हैं TP, that is 2 nanosecond. But एक case आता है कि different delays होते हैं, ठीक है. When we have different delay, मतलब कि स्टेज 1 का डिले है 2 नैनोसेकेंड, स्टेज 3 का है 1 नैनोसेकेंड, स्टेज 3 इज 3 नैनोसेकेंड, देन दिस इज 2 नैनोसेकेंड, दिस इज 5 नैनोसेकेंड सपोज. So in that case what we will do is we take the maximum of delays, मतलब कि we have to take maximum of these values. So हमारा आंसर आया 5. मैक्सिमम क्या इन सब में वैल्यू 5. दिस मीन्स दैट टीपी हो गया हमारा 5 नैनोसेकेंड इन केस ऑफ डिफरेंट डिले. सो वही हमने यहाँ पे भी किया है. क्वेश्चन में दे हैव क्लियरली मेंशन दैट बी इज हैविंग 5 स्टेजेस, ठीक है, and 5 stages with respective delays, मतलब कि every stage is having a different delay, 2 nanosecond, 3 nanosecond, 1 nanosecond, 2 nanosecond and 2 nanosecond. So अगर हमारे पास different delays हैं, so in that case what we have to do, this time will be calculated by finding the maximum value. So maximum value क्या है इन सब में से? maximum value है हमारी 3 nanosecond. So हो गया 3 nanosecond. So this 3 nanoseconds will be substituted in this formula at place of TP, that is clock cycle time for pipeline, ठीक है. So this is how you will solve your question. Okay, अब clear है सोनू? Any doubt? Let's see next question. यूनिकोड, ये आप दिस क्वेश्चन इज फॉर कंप्यूटर साइंस. ये कंप्यूटर साइंस का ये क्लासेस चल रही हैं. ओके, सो इट इज गिवन टू अस दैट वी हैव अ नॉन पाइपलाइन. ओके, नॉन पाइपलाइन में क्लॉक इज टेकिंग 1 nanosecond. ओके, देन 1 nanosecond for 1 cycle, ठीक है, 1 nanosecond cycle. Then they are saying that we have allocated 4 cycle for ALU operation, जो आपका arithmetic logical unit होता है उसके लिए, 4 for branch, okay, and 5 cycles, basically cycles की बात हो रही, ठीक है, 5 cycles for memory organization. Okay, so this is what they are saying. Then they are saying and frequencies भी given है आपके पास, ठीक है. So relative frequency जो आपको mention की हुई है, relative frequencies are 40%, 20%, 40% respectively. मतलब कि they are saying that you are using, in a case of non-pipeline, you are using 4 cycles for ALU, ठीक है, arithmetic logical unit, and relative frequency for ALU is 40%. मतलब एक cycle आप 40% टाइम में आपको frequency जो use कर रहे हो ALU की, that is 40%, ठीक है. Then they are saying assume same clock cycle is used for pipeline processor.
Okay, so for pipeline also we are using the same clock cycle, but there is overhead with overhead of 0.2 nanosecond. Then what you have to tell? You have to tell what is the speed up. ट्राई करो इसको. ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन किया है? यहाँ पे दे आर इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट देयर इज अ नॉन पाइपलाइन सिस्टम, ठीक है, जिसमें जो क्लॉक है दैट इज 1 नैनोसेकेंड, मतलब एक साइकिल में 1 नैनोसेकेंड, आपकी 1 नैनोसेकेंड साइकिल में आपकी क्लॉक की वैल्यू है. ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं कि 4 साइकिल्स जो यूज हुई वो ALU के लिए यूज हुई, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन के लिए. 4 साइकिल्स यूज हुई ब्रांच के लिए, ऑपरेशन के लिए, और 5 साइकिल्स यूज हुई मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, with the relative frequencies 40%, 20% and 40%. Then they are saying ki assume same clock cycle is used for pipeline also, but there is overhead of 0.2 nanoseconds. Then you have to tell what will be the speed up. Question easy है, थोड़ा सा tricky लग रहा होगा, but question easy है, आप आराम से कर सकते हो. Yes. क्या आएगा स्पीड अप? अगर नहीं हो रहा है तो यू कैन राइट कि मैम नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, सो वील नॉट वेस्ट टाइम एंड लाइक आई विल गो अहेड विद एक्सप्लेनिंग. बट अगर आप ट्राई कर रहे हो तो प्लीज डू टेल लाइक दैट ऑल्सो. ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग वेट करो मेरा और मैं वेट करूंगा आपका. ठीक है, सी यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सी कंसेप्ट यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया उन्होंने. व्हाट दे हैव सेड इज, पहले आप ये देखो नॉन पाइपलाइन का. ठीक है, व्हाट दे आर सेइंग इज दैट कि इन केस ऑफ नॉन पाइपलाइन क्लॉक साइकिल है 1 नैनोसेकेंड की. ठीक है, एंड ALU अलग एक ऑपरेशन ALU है, एक आपका ब्रांच ऑपरेशन है और एक आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, इन सब में कितनी साइकिल लग रही है? ALU में आपकी लग रही है 4 साइकिल, ब्रांच में लग रही है 4 साइकिल और मेमोरी में लग रही है 5 साइकिल. ठीक है, सो अगर हमें फाइंड करना है नॉन पाइपलाइन का एग्जीक्यूशन टाइम, वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दे आर सेइंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड अप. स्पीड अप का फॉर्मूला वी नो दैट एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइन डिवाइड बाय एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइपलाइन. ठीक है, एंड हमें नॉन एग्जीक्यूशन टाइम का फॉर्मूला ही पता है कि नॉन पाइपलाइन के केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है n मल्टीप्लाई बाई TN, एंड पाइपलाइन के केस में हमारा फॉर्मूला होता है k प्लस n माइनस 1 इंटू TP. बट यहाँ पे ना हमें स्टेजेस दी हुई हैं, ना हमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो हाउ विल अप्लाई, हाउ विल सॉल्व दिस? सो इन दैट केसेस व्हाट दे आर गिवन इज दे आर सेइंग 4 cycle for ALU, 4 for branch and 5 for memory organizations with relative frequencies. मतलब कि
जो आपकी ALU है, ALU की फ्रीक्वेंसी है 40%, मतलब ALU के ऑपरेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, 40% की फ्रीक्वेंसी है। तो 4 साइकिल्स की फ्रीक्वेंसी क्यों हुई, 4 इंटू 0.40 प्लस 4 फॉर ब्रांच। 4 फॉर ब्रांच मतलब ये आपका, आप निकाल रहे हो कि नॉन पाइपलाइन के केस में हमारा एग्जीक्यूशन टाइम कितना होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, वी आर कैलकुलेटिंग द एग्जीक्यूशन टाइम इन केस ऑफ नॉन pipeline. And how we are calculating it, we are given the frequencies of the operations being performed and the cycle they are taking for execution, and we know that clock cycle is equal to 1 nanosecond. So 4 into 0.40, again this one is for branch, so 4 into 0.20 plus this one is 40% for memory, so 5 into 0.40. So when you will solve this, तो आपका execution time आ जाएगा 4.4 nanosecond for non pipeline. Now what about pipeline? अब pipeline का कैसे calculate करोगे? So वहां पे they are clearly saying assume सेम क्लॉक साइकिल इज यूज्ड फॉर पाइपलाइन, मतलब कि ये वाली चीज, सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज, क्लॉक साइकिल भी सेम, जो पाइपलाइन है आपका वो भी सेम क्लॉक साइकिल यूज कर रही है, मतलब कि 1 नैनो सेकेंड बट विद ओवरहेड ऑफ 0.2 नैनो सेकेंड्स। सो ये हो गया आपका 1.2 नैनो सेकेंड्स। सो जो आपका स्पीड अप आया, स्पीड अप विल बी 4.4 डिवाइड बाय 1.2, दैट इज इक्वल टू 3.6। सो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.6। ये बात समझ में आई कैसे किया ये वाला? So if they have just simply given us the frequencies of the operations with the cycle, कि कितने साइकिल में कितनी फ्रीक्वेंसी में वो ऑपरेशन हो रहे हैं, विद दैट ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइन एंड पाइपलाइन। ओके, ये क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so next question is, ओके वेट, अभी ये क्वेश्चन कर लो फिर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देयर आर टू कंपोनेंट्स, ठीक है। क्या कंपोनेंट्स हैं आपके? इंटीजर पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, फिर दे आर सेइंग दैट फ्लोटिंग पॉइंट इज इनहैंस्ड, फ्लोटिंग पॉइंट जो आपका कंपोनेंट है इट इज इनहैंस्ड such that it runs 4 times faster, but only 50% of instructions are floating point instructions. Then they're asking what is the performance gain using Amdahl's law. सुना है लॉ का नाम, सुना होगा आप लोगों ने। ये वाला क्वेश्चन कर लो अब है, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। आपका जो नॉन पाइपलाइन वाला पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। So they are saying that there are two components, integer and floating point. Floating point is enhanced such that it runs 4 times faster than the previous one, but only 50% of instructions are floating point. So you have to tell what is the performance gain using Amdahl's law.
एम्डल्स लॉ फॉर्मूला सुना है आप लोगों ने? एफ है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ बेसिकली आपका है कि एम्डल्स लॉ में आप परफॉर्मेंस गेन का ही फॉर्मूला है, ठीक है। बस आपको इसमें फॉर्मूला याद करना है कि क्या फॉर्मूला है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है। तो बताओ वैल्यू आंसर क्या आ रहा है इसका? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? एफ इज 50% या फिर 0.50 एंड एस इज 4। सो सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 1/0.5 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 माइनस 0.5। सो जब उसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 4/2.5 जिसकी वैल्यू आएगी 1.6। ओके या सो अब यह क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? क्या समझ नहीं आया इसमें, बताओ मेरे को। क्या पॉइंट समझ नहीं आ रहा है इसमें? नॉन पाइपलाइन में क्या समझ नहीं आ रहा है? सी यहाँ पे दे आर सेइंग नॉन पाइपलाइन में क्या होता है। नॉन पाइपलाइन में वी हैव डिफरेंट स्टेजेस विद डिफरेंट एग्जीक्यूशन टाइम। मतलब सॉरी, नॉन पाइपलाइन में आपको क्या होता है कि पाइपलाइन में तो द स्टेजेस आर इन अ पाइपलाइन एग्जीक्यूशन की एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, राइट। ऐसे होता है कि अगर इफ योर इंस्ट्रक्शन इज नॉट फुली एग्जीक्यूटेड ऑल्सो देन ऑल्सो इट विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। बट नॉन पाइपलाइन में क्या होता है? नॉन पाइपलाइन में वी ट्राई टू कंप्लीट वन इंस्ट्रक्शन एंड अनटिल अनलेस दैट इंस्ट्रक्शन इज नॉट एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली तब तक कोई नया इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट नहीं करते। दिस इज नॉन पाइपलाइन। यस। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में व्हाट दे आर सेइंग, दे हैव गिवन यू 3 ऑपरेशंस। they have given you ALU, they have given you branch operation and they have given you memory organization operation. they are and we know कि साइकिल के बेसिस पे भी हम क्लॉक साइकिल के बेसिस पे भी हम टाइम को मेंशन कर सकते हैं कि ये ऑपरेशन इतने साइकिल में एग्जीक्यूट हो रहा है, ये पर्टिकुलर ऑपरेशन इतने साइकिल में एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। इस क्वेश्चन में दे आर सेइंग दैट आपकी जो ALU है, जो आपका ALU है वो 4 साइकिल ले रहा है टू एग्जीक्यूट। जहां पे उन्होंने बताया कि एक जो क्लॉक साइकिल है उसकी वैल्यू है 1 नैनो सेकेंड, ठीक है। क्या कह रहा है? ALU ले रहा है 4 साइकिल, ब्रांच ऑपरेशन ले रहा है 4 साइकिल और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है 5 साइकिल्स विद रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो पॉइंट है ये इसी में है, ये इसी के साथ मिक्स है, मतलब ये एक ही पॉइंट है पूरा। दैट इज 4 साइकिल फॉर ALU जिसकी फ्रीक्वेंसी है 40%, मतलब 40% जो है आपका जो ALU है वो वर्क कर रहा है एट अ टाइम। ब्रांच जो है 20% फ्रीक्वेंसी है उसकी और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की फ्रीक्वेंसी है 40%। तब वो आपसे पूछ रहे हैं कि नॉन पाइपलाइन के केस में कैसे आप एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करोगे। सो व्हेन वी आर गिवन नॉन पाइपलाइन, इन दैट केस एग्जीक्यूशन टाइम, अगर हमें क्लॉक्स इस पॉइंट इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब हमें जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है दैट इज n इंटू TN वो अगर नहीं दिया हुआ है, दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, इन दैट केस यू विल यूज दिस मेथड टू सॉल्व योर क्वेश्चन। क्या? देखो 4 साइकिल में ALU जो है 40% वर्क कर रहा है,